हेलो फ्यूचर मेडिको, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर। सो हम लोगों ने यहाँ पे नीट 2024 बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ हम लोगों ने क्लास 11th का कम्प्लीटली चैप्टर 1 to 22 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन जो रिपीटेड है नीट के लिए, नीट 2024 में आने के ज़्यादा चांसेस है, वो मैंने करवा दिए आपको। अब मैं स्टार्ट की हूँ आपके लिए क्लास 12 का। तो कल मैंने आपको चैप्टर 1 का करवाया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी नीट एस्पिरेंट हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से आपके लिए वीडियोस बना पाएँ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, ए pollen ट्यूब एंड ओव्यूल, ऑप्शन बी इज pollen न्यूक्लियस एंड ओव्यूल न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इज pollen एंड स्टिग्मा, ऑप्शन डी pollen ग्रेन एंड ओवरी। तो अपना अपना आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, pollen nucleus and ovule nucleus, because fertilization flowering plant involve the fusion of male gamete, जिस मेल गैमेट क्या है, pollen nucleus, with the female gamete ovule nucleus। तो इन दोनों के साथ फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा और फ्यूजन होगा pollen nucleus का और ओव्यूल्स न्यूक्लियस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कह रहा है कौन सा मेल गैमेटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट का। ऑप्शन ए इज pollen ग्रेन, ऑप्शन बी इज ओव्यूल एंड द सी एम्ब्रियोसेक, एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज सीड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बिकॉज pollen grain, the male gametophyte in flowering plant is the pollen grain which contain the male gametes. Next question, question number 3. The structure that provide nourishment to the developing embryo in a seed is called. Option A is cotyledon, option B endosperm, and the C pericarp, and the D radicle. तो ऑप्शन नंबर बी endosperm is the correct answer, because endosperm is a tissue in the seed that provide nourishment to developing embryo. Next question. Question number 4 is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma is known as. Option A is pollination, and the B fertilization, C germination, and the D gametogenesis. So option A is correct, because pollination is correct, because pollination is the transfer of pollen grain from the male reproductive organ, that means anther, to the female reproductive organ, that means stigma. Okay, so option A is correct answer, pollination. Next question, question number 5 is, in a typical flower the female reproductive organ is called the. Option A is stamen, and the B carpel, and the C petal, D option sepal. Option number B is correct, carpel. Option number B is correct, carpel. The carpel is a female reproductive organ in a flower consisting of the stigma, style and ovary. इसमें तीन चीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 is double fertilization in flowering plant involve the fusion of one male gamete with the egg cell and the other male gamete with the, किससे होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिनर्गिड सेल, एंड द बी एंटीपोडल सेल, एंड द सी पोलर न्यूक्लियाई, डी सेंट्रल सेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पोलर न्यूक्लियाई, बिकॉज इन डबल फर्टिलाइजेशन one male gamete fuse with the egg cell and the other fuses with the polar nuclei in the central cell. Okay, तो ऑप्शन सी पोलर न्यूक्लियाई इज द करेक्ट आंसर। वो किससे जाके पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होगा, अपने सेंट्रल सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सीड फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल
is called? Option A is germination, and the B pollination, the C fertilization, and the D seed development. Option number D is correct, seed development, because seed development occurs after fertilization when the ovule mature into a seed. Next question, question number 8 is, which part of the flower develops into the fruit? कह रहा है कि which part of the flower develop into the fruit? Option A is stigma and the B style. Option C ovary and the D petal. Option C is correct, ovary, because the ovary of the flower develop into the fruit after fertilization. Okay. Next question, question number 9 is, in angiosperm, the opening and closing of stomata are regulated by changes in the turgor pressure of. किसके टर्गर प्रेशर से स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं. ऑप्शन ए इज गार्ड सेल एंड द बी एपिडर्मल सेल, सी पैलिसेड सेल एंड द डी xylem cell. Option number A, guard cell is correct answer, because stomatal opening and closing are controlled by the changes in turgor pressure in the guard cell. Okay. Next question, question number 10. The process by which pollen grain are transferred from the anther to the stigma of the same flower is termed. Option A is self-pollination and the B cross-pollination, the D C double fertilization and the D apomixis. Option number A is correct, self-pollination. Self-pollination, because self-pollination occur when pollen is transferred from the anther to the stigma of the same flower. Okay. Next question is 11. What is the primary function of the anther in a flower? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन? ओके, एंथर का प्राइमरी फंक्शन अपन को बताना है यहाँ पे फ्लावर के एंथर का. ऑप्शन ए इज प्रोटेक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड द बी प्रोडक्शन ऑफ एग एंड द सी प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड द डी नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो ऑप्शन नंबर C, production of pollen grain is correct answer, because the anther is the male reproductive organ that produce pollen grain containing male gamete. Okay. Next question, question number 12 is, which hormone is responsible for the growth and elongation of the style in a flower? Option number A is auxin and the B is zevalin and the C cytokinin and the D ethylene. Option number A, auxin, is responsible for the growth and elongation of style of a flower. Next question, question number 13. What is the term for the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same species? Option देखते हैं. Option A is self-pollination and the B is cross-pollination and the C is double fertilization and the D apomixis. Option number B, cross-fertilization, is the correct answer. Sorry, option number B is correct answer, because cross-pollination involves the transfer of pollen grain from the anther to one flower to the stigma of another flower. Okay. Next question, question number 14. In a typical dicot seed, the cotyledons are option A 1, B 2, C 3 and the 4 D 4. यहाँ पे R होगा, है ना. 4. तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 2 is correct answer, because in dicot seed there are typical 2 cotyledons. Okay. Next question and the last question, question number 15. The process of pollen tube penetration into the ovule is known as. Option A is germination and the B pollination, C is fertilization and the last D syngamy. Option number C, fertilization, is correct answer, because the penetration of the pollen tube into the ovule is a crucial step in the fertilization प्रोसेस. तो ये अपना लास्ट था क्वेश्चन.
जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो नीट 2024 एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्प्रिंट हो। सो थैंक यू।